हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पॉट्स एंड स्टाइल। और आज हम करेंगे ग्रीन आई शैडो हालो मेकअप। सो फ्यू डेज बैक धनतेरस पे मैंने ग्रीन आई मेकअप किया था, which was really appreciated by a lot of my friends, and I got a lot of DMs and messages on Messenger saying ki can you show us how you did it. So this is just to help them out. I'm not a pro mua, so don't judge me on that, but I think the look really looked good and it's very effortless, very easy. So I'm gonna do that for you guys. So let's begin. So guys, before we start our makeup, let's sanitize our hands with a sanitizer. इससे आपके हाथों में जो भी जर्म्स और बैक्टीरियाज है दैट विल नॉट गो इनटू योर फेस. Now the second thing is very important. You need to prep your skin. Now for that you need two things. First is a toner. You can use a toner or you can use a face mist. Both works in the same way because you have to tone your face and hydrate it so that your makeup base looks flawless. It does not look like you have a lot of open pores. तो ये काफ़ी अच्छा फिनिश देता है आपके मेकअप को. तो आप चाहो तो टोनर यूज़ करो या मिस्ट यूज़ करो. इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. सो टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ दी प्लम ग्रीन टी रिवाइटलाइजिंग फेस मिस्ट. जस्ट हैव टू स्प्रे इट लाइक दिस एंड इसके बाद हम इसको थोड़ा डैप करेंगे बस. इसके बाद हम यूज़ करेंगे मॉइस्चराइजर. आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो. मैं यूज़ करती हूँ अर्बन बोटैनिक्स का मॉइस्चराइजर, विच इज़ अ नीम एंड बेसिल मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर एंड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. और ये नॉन कॉमेडोजेनिक है तो इससे एक्ने नहीं होते. सो आई एम जस्ट टेकिंग फ्यू पम्प्स. Now we will start with the eye makeup first. So guys, first of all it's very important कि अगर आपके डार्क सर्कल है या आपके लिप्स के आसपास ब्लैकनेस है या कहीं पे भी आपको डार्क पैचेस है, you should be using a corrector. You can either use a yellow corrector or an orange corrector. I prefer to use a orange corrector. कभी कभी मैं yellow corrector भी use करती हूँ, but orange one is really good if you have dark circles. This is from the brand PAC. एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट. सो मैं फिंगर से ही इसको कर रही हूँ क्योंकि फिंगर से इसको ब्लेंड करना काफ़ी ईजी होता है. नाउ आई एम गोना यूज़ दिस स्पंज. आपके पास अगर ड्रॉप शेप का स्पंज है तो यू कैन यूज़ दैट. सो मैं इसे थोड़ा सा मॉइस्ट कर लूँगी यूजिंग द सेम मिस्ट. आप चाहो तो इसमें नॉर्मल वाटर भी स्प्रे कर सकते हो. सो आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट. और ब्लेंडिंग हम डैप करते हुए करेंगे. So I'm using the Lakme White Intense Concealer. You can use any other concealer, whatever you like. और इसे हमें मिटाना नहीं है, इसे बस डैप करना है. जस्ट डैप करके इसको छोड़ देना है. सो हम लोग आई मेकअप स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए आपको चाहिए एक ब्लेंडिंग ब्रश. अगर आपके पास इस तरीके का ब्रश का किट हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. सो आई एम टेकिंग दिस वन फ्रॉम माई ब्रश किट और इसका नंबर है एंगल्ड आई शेडो ब्रश नंबर 9 एंड दिस इज़ बाय द ब्रांड पूना स्टोर. इसके पूना स्टोर के ब्रशेस काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, तो यू कैन बाय दैट इफ़ यू वांट. सो आई एम टेकिंग दिस वन फ्रॉम माय पैलेट द न्यूड्स मेबलिन. सो लेट्स गो विद दिस वन एंड क्रिएट अ बेस. If you want, you can try putting a tape here. And now I'm gonna use a little bit of peach color. So let me do with this one. मैं इसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगी कि आप Amazon से इसको परचेज कर सको. So I'm taking peach. Now guys, this is done. अब हम लोग green color लेंगे. And now how to apply the green color? You basically have to take a brush like this. This is not from the same set, but there is one in this set as well. So you can use the number 8 brush in this. So I have this Nykaa का cream to powder foundation जो मेरे शेड में नहीं आया था. So इसे मैं कंसीलर की तरह यूज़ कर रही हूँ, फाउंडेशन की तरह यूज़ नहीं करती हूँ. तो इसीलिए मैं कंसील करने के लिए भी इसे यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं इसको फिनिश करूँ, बिकॉज आई कांट यूज़ इट एज अ कॉम्पैक्ट. ये मेरे शेड का नहीं है. तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है. आप उसी कंसीलर से भी कर सकते हो, इट्स टोटली योर चॉइस. और जब ये लाइन ड्रॉ हो गई है तो उसके बाद मैं इसे फिल कर दे रही हूँ अंदर. अब मैं अपना पैलेट लूँगी जिसमें से मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ. तो मैंने इसमें से ग्रीन कलर ले लिया है.
मैंने यहाँ इनर कॉर्नर को छोड़ दिया है, थोड़ा दूरी से स्टार्ट किया है। Now we are halfway through and now I'm gonna change the color. So always keep a napkin like this ready and you just have to clean your brush like this from both the sides and you are good to go with a different color of your choice. So I'm gonna take dark green now. And I'm gonna just put it on this. Now outer corner के लिए I'm gonna do the same thing. मैं आज ब्लैक यूज़ करती हूँ, उस दिन मैंने ब्राउन यूज़ किया था, तो लेट्स यूज़ ब्लैक. So you can see now we're going to blend it all together. So blending के लिए we need a blending brush which is like this. अगर आपके पास इस तरीके का ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है तो आप किसी भी डिफरेंट तरीके का ब्लेंडिंग ब्रश ले सकते हो. एंड गोज लाइक दिस. तो आपको बेसिकली राउंड राउंड चलाना है इसको. This black area looks separate and it's not blended into the green, so हम लोग इसको blend कर लेंगे. And you also see that the green and the light green and the dark green is not blended, so let's blend it. Now let's do the same thing on the other eye. Now we want to show it a little lifted, तो उसके लिए हम बस यहाँ से यहाँ कंसीलर डालेंगे आई के नीचे से आईब्रो के टिप तक और उसको हम ब्लेंड करेंगे यूजिंग दिस ब्रश जिससे हमने कंसीलर लगाया था और जो भी एक्स्ट्रा है वो निकल जाए. अगर आप टेप लगाते हो तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है. Now you can use a gold color from the palette itself or you can use a golden highlighter. It's completely your choice. So I'm using the Master Chrome highlighter by Maybelline and I'm gonna apply it using my fingertip itself ताकि ये काफ़ी easy हो जाए. आप चाहो तो आप ब्रश से भी यूज़ कर सकते हो but I prefer to use it using the finger. So I'm just going to use it in the middle little and इसको अपने ही फिंगर्स से ही हम इसको ब्लेंड करेंगे थोड़ा थोड़ा. Now I want to highlight the edges of my eyebrows, so I'm gonna do that. तो उसके लिए मैंने एक छोटा ब्रश लिया है इस तरीके का. Now, हम सिर्फ यहाँ जहाँ आईब्रो एंड हो रही है वहाँ हम इसको थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करेंगे. Now what you have to do is you have to basically shape your eyebrows. So for shaping your eyebrows, you can use the brown color, dark brown color or the black color from the Maybelline Nude palette itself. So I'm using the dark brown color instead of the black one because मेरी eyebrows already काफ़ी dark है. तो उसके लिए I'm just gonna draw a line to make it precise just like this. So if you have angular eyebrows, just take it like this and just bring it down. Just have to decide कि कहाँ आपका point है, eyebrow point, and वहाँ तक आप उसको lift कीजिए. उसके बाद just bring it down in shape. So that's it guys. So our eyebrows are done. So for eyeliner, I have recently discovered this in color eyeliner and this is very affordable and it comes in a set of 2. So I'm using the eyeliner brush and I'm just applying my eyeliner. So start with the outer tip first. That's it. I'm going to take it down. So the liner is done. Now I'm going to use the mascara. So I'm using the Essence, the False Lashes mascara, which is not available in India. But if you are outside the country and if you travel anytime, do buy this one. It's really affordable and it's the best mascara that I've ever come across.
Now our mascara is done on both the eyes. I'm gonna do my face makeup. We have already concealed and corrected our face. Now I'm just gonna do some basic makeup, which is taking the foundation. So I use the PAC HD foundation, and the number that I'm using is 3.0. This is the best foundation that I have ever come across. I was using the L'Oreal one before, and I've also used the Maybelline foundation, but I think this is the best one because it is really good for dusky skin tone. So I'm just gonna wet my sponge using the mist again. You can also use water, as I told you before. So I'm just gonna take it in fingertips and apply it into dots. You don't need too much of product, you need very less quantity of product, and I'm just wiping it on my sponge itself. So this makeup which I did not do contouring and any sort of bronzing on my face. I'm gonna just use a loose powder to set it. This is the Kryolan loose powder. So this is the yellow powder basically, and I just take it like this on a brush and remove the excess and just do it like this. That's it. Now apart from this, what I did for my face was I applied blush. So I'm using the Sugar blush. This is Contour De-Force Mini Blush by Sugar, and this is in the shade 05 Coral Climax. Now you can use the same brush if you know the technique, or you can use a brush like this, which is really good for blush and for contouring as well. So I'm gonna use this one itself because I'm using a very light blush on my face. So yeah, smile a bit. So the blush is done. Now we are going to do the highlighting part. If you want to skip highlighting, it's a daytime party or something, you can skip highlighting, but I like to highlight my face. So I'm using the Master Chrome highlighter again. And I'm taking this brush, not the fan brush. This is how you highlight your nose. If you want to make your nose thin, you can do a contouring for your nose, but I'm not doing contouring, I'm skipping it. And just highlighting the cheekbones. And this is how you highlight using this brush. Just move it into circular motion on your cheekbone. And if you want, you can just highlight it here, a little here, a little bit on top of your lips, and just remove the excess product. Now you might wanna just blend it into your face. This part, and this part. You don't end up doing it here. This part and this part. The last thing that I would want to tell you is doing the inner corners, highlighting the inner corners. So taking the same highlighter again, and we'll just place it there. We'll not blend it, we'll just place the highlighter here on the inner corner. That's it. Do you see? Again taking the same. Just placing it. Now I want to highlight this part as well. So I'm taking the same amount of product which is left on my brush. I'm just doing it here, trying to join it because we left a little bit of area here. यहाँ हमने थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी, तो हम लोग बस उसको cover कर रहे हैं. That's it, guys. And now if you want to put kajal, you can put kajal. I don't like putting kajal these days. It makes my eyes look smaller because I already have small eyes. So I'm taking the green one, and you have to take a very thin brush
You can take a thin brush like this. इससे भी अगर angular brush आपके पास है तो you can use that. Just taking it a little on my tape, removing the excess ताकि आपकी आंखों में कोई particles ना जाए. And यहाँ से आपकी lower line से आप start करोगे. Keep blending, and यहाँ लाके आपको center से थोड़ा आगे लाके आपको उसको just छोड़ देना है. That's it. So the final and last step is the lipstick. So for that I'm gonna take the lip liner from PAC Cosmetic again, and this is in the shade LPL04 Cappuccino. So I'm gonna make a outline before I do my lipstick. I just do a V and then extend it and end it here, and then I do a semicircle here. Now I'm gonna use this lipstick called Cranberry Sangria, and this is by Nykaa. So guys, this is the final look, and if you want to put false lashes, you can totally do that. So let me quickly put my false lashes and get back to you. So guys, I've applied my lashes, and अब मैं इसको lashes को अपने false lashes के साथ combine करूँगी, merge करूँगी. So I'm gonna use this. So guys, I'm done with my lashes also, and I'm just gonna quickly change and show you my final look. So guys, this is my final look. So guys, you can also use a primer before starting your makeup, and you can also use a setting spray if you want your makeup to last longer. So guys, this is how my makeup looks, and hope you like this video, and do like and subscribe to my channel, and see you in my next video. Bye bye.